Sir, what is the role of blank path? Blank path. I Yes, sir. actually don't know what you mean by blank path. सर जीअं त सर जेको हिकिड़ो क्लोज पाथ आहे ॿियो सर रहिजे थो जीअं ए ऐं बी हिते सर ब्लैंक आहे हीअं न सर जीअं पहिरां हुयो उहो जेको रहिजे थो उनजो सर रोल छा आहे हिन में फॉर एग्जांपल दिस वन हिन में था चओ ही जेको नो सर हिकिड़ो प्रीवियस वन हिन में यस सर हिते इन में जी जी कहिड़ो सवाल आहे तव्हांजो सर ब्लू पाथ जो हिते रोल छा आहे ब्लू पाथ सर हिन में को सर्किट क्लोज ई न आहे न को रोल कोन्हे ही बस पाथ यूज़ न पियो थिए रेड पाथ यूज़ थिए पियो ओके सर इन जो को बि यूज़ कोन्हे इहो ईअं ई पियो आहे इन केस में ऐं जेकॾहिं ॿई स्विच मथे थी विया त पोइ वरी ब्लू पाथ यूज़ थींदो ओके सर आई गॉट इट ठीकु आहे वरी हिकिड़ो हेठि आहे हिकिड़ो मथे आहे त पाथ नथो ठहे सर्किट कंप्लीट इनखे इंग्लिश में चइबो आहे त सर्किट कंप्लीट नथो थिए ठीकु आहे सर्किट इज़ नॉट कंप्लीट यस सर circuit is not complete here it is not complete here it is not complete here but it is complete here and it is complete here सही है यस सर अच्छा you can use SPDT switches in different ways in electrical circuits huh I have used 2 SPDT switches and you can use them in the laboratory you can go to basic you can go to engineering lab and ask them for SPDT switches you can connect 2 SPDT switches either this way or this way पहिरीं तव्हां छा कंदा पहिरीं हिकिड़ो SPDT स्विच यूज़ करे सघंदा ठीकु आहे पोइ तव्हां 2 SPDT स्विचिस यूज़ करे सघो था तव्हां चवंदा त तव्हांखे लैब में कराईंदासीं इहो ऐं साईं सलमान खे चई छॾींदुसि लैब में SPDT स्विचिस आर अवेलेबल ठीकु आहे जी सर तव्हां चइजो असां कंदा सर ओके जी जी सर ये जो कंस्ट्रक्शन है सारे के सारे ऑपरेशन के हिसाब से अलग अलग कंस्ट्रक्शन है तो ये सब याद करनी पड़ेगी again I will tell you not to memorize but to understand it is very important for you I am trying to explain because I want you to understand ओके सर okay I actually failed to understand how you will memorize and why would you like to memorize मूंखे त ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे न त ई सभु कीअं तूं मेमोराइज़ करे सघिजे ऐं तव्हां कीअं मेमोराइज़ कंदा ऐं छो मेमोराइज़ कंदा I am trying to explain you so that you understand okay so this one is a statement Salim's father's sorry I will change this I will say Salim's guardian's monthly income is less than rupees 25,000 this is A and variable B chai Salim has never failed in any examination and variable C is Salim is eligible for scholarship. Now tell me which of the 3 variables is outcome? Y is equal to A and B. C is equal to AB. Yeah, C, outcome. sir, C. Outcome is C. Variable kehdo hai? C is the outcome. A and B are inputs. Isn't it? Yes, sir. So this outcome is equal to C is equal to A and B. okay.
Now this condition, see, if Salim's guardian's monthly income is less than rupees 25,000 and Salim has never failed in any examination, he is eligible for scholarship. So this is AND operation. This is example of AND operation. But we have already done this, I think, huh? Yes, sir. Previously. It was Yes, sir. repetition. Okay. So let me ask you any, should you have any queries here, any confusion, ask me. Claude Shannon Chakayo used switches to perform logic operations. Claude Shannon Chakayo. Claude Shannon used switches to perform a logic operation. Switches to perform logic operation. हाणे ॻाल्हि सम्झ में अची वई? Yes, sir. And this started the era of digital electronics. ठीक है? Switches were replaced with transistors. Switches जी जाते अची छा थी विया? Transistor अची विया. Transistors can work as switches. सही है? Yes, sir. मिसाल तौर ट्रांजिस्टर तव्हां लैब में ॾिठो ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर ओपन स्विच हूंदा आहिनि या क्लोज स्विच वर्क कंदा आहिनि? स्विच आहे माना इट कैन बी ईदर क्लोज्ड और ओपनड. स्विच आहे न, उहो स्विच कहिड़े कम जो जेको हमेशा क्लोज हुजे या हमेशा ओपन हुजे? स्विच आहे इनखे क्लोज बि करे सघूं था, ओपन बि. ओपन बि करे सघूं था. ही ट्रांजिस्टर तव्हां पढ़िया हूंदा न पहिरीं? यस सर. Yes, sir. So these transistors are available in the laboratory. You can use them as on-off switches. Perhaps if you want to do, you can do, or you can do in the course of digital electronics. सही है. ॿियो हूंदो आहे रिले. रिले हूंदो आहे न? So automatic Yes, sir. switch. Relays are also used as a switch. Relays are also electromechanical switches. Or automatic switch. Relays are electromechanical switches. They are Electromechanical switches. electromechanical switches. Transistor is electronic switch. And relay is electromechanical switch. You can use relays also as switches. ठीक है? And you can perform logic operations using these switches, as I shown you in the diagram. हाणे पाण पढ़ंदासीं basic computer organization. ठीक? So this you may have already known that computer has three major parts: input device, then processor, and the output device. So CPU is a term that is used for the processor, central processing unit. Okay, now this generally laymen, they call it CPU, but it is actually system unit. System unit आई जेको दॿो हूंदो आहे न, इहो actually छा आहे? सिस्टम यूनिट. System unit आहे. System unit. इन system unit जे अंदर छा हूंदो आहे? Motherboard. मदरबोर्ड. Memory. Motherboard जे अंदर ही हूंदी आहे memory actually. ठीक है? Yes, sir. High drive. ऐं storage हूंदो आहे.
Yes, sir. communication ports hunda hain. He motherboard hai. Actually motherboard mein battery by motherboard mein processor by motherboard mein you can Heat see sink का sir microprocessor और BIOS processor. data. Yeah, heat sink is actually placed over the processor. Processor जे Yes. मथा लॻल हूंदी आहे. Yes, sir. ठीकु आहे. ऐं IO ports आहिनि. ठीकु आहे. ऐं CPU सॉकेट आहे. सॉकेट हूंदो आहे ने सॉकेट में CPU पवंदो आहे. माना प्रोसेसर. Okay, and RAM slots, and see these are the slots, expansion slots, and we insert RAM here. Okay, and you can put graphics card, you can insert sound card, you can insert modem. People can insert different, things in these slots. Okay. Expansion slots में. See, I show you where are the expansion slots. See the expansion slots in white color. Now expansion slots में you can put extra hardware. ठीक है. Extra hardware जो केड़ो examples हैं, graphics card, sound Sir, card, modem. ठीक है. Storage connectors. Okay, see there are storage connectors. You can put some more hardware like hard disks. ठीक है. In these expansion, in these ports, and then power supply regulator module is there, connectors are there, BIOS chip is there, which is ROM, read only memory. Okay, and CMOS battery IO ports are there, like for example USB, HDMI, display port, printer port, Ethernet, Wi-Fi, audio, all these are, in the rear ports. Rear ports में you can, so मथे ports ॾेखारियल आहिनि न. इन्हनि ports में तव्हां खे USB port मिलंदो, HDMI port मिलंदो, display port, printer port. ठीक. yes sir. Yeah, and ॿियो fan हूंदो आहे CPU में. जी ॿुधायो. Yes, sir. Okay, see system unit जे पुठियां ही तव्हांखे ports नज़र ईंदा आहिनि. You will Yes, always sir. find these ports on the back. Okay. You can take any CPU. There are many old CPUs available in our lab. You can open those and see their inside and their, rear, their front. You can check. You can open them. We have old CPUs available to open and watch. Yesterday I checked it. Ji? So please switch off your mic, if there is some background noise. Okay, CPU mana actually microprocessor. It is, I have shown you the microprocessor in picture. It is Yes, sir. an IC. It is an IC, integrated circuit. It is a complete circuit on a silicon chip. It can be 4-bit, it can be 8-bit, it can be 16-bit, it can be 32-bit, it can be 64-bit. Okay, a group of 4 bits is called a nibble. A group of 8 bits is called a byte. Bit.
See, these are the examples of a nibble. So there are 4 memory units. You put them together and it makes a 4-bit register. 4-bit register. 4-bit register can store 1 nibble. You have already written binary numbers from 0000 to 1111. Means those are binary numbers which are equivalent to decimal 0 to decimal 15. Total 16 combinations. The first ever microprocessor was a 4-bit microprocessor because there were 4-bit registers inside that processor. सही है? जे अंदर जेके रजिस्टर हुआ केड़ा हुआ नंढड़ा हुआ 4-bit registers हुआ 4-bit डेटा के हू हिकड़े धक में प्रोसेस करे छॾींदा हुआ. They could add 2 4-bit numbers हिकड़े ही धक में. ठीक है, 4-bit numbers हू ऐड करे छॾींदा हुआ. Boy, if you bring together 2 nibbles, they make 8-bit data. And if you bring 4 nibbles together, they make 16-bit data. Acha, 1 byte mana 8 bits, K mana kilo. And in digital world, 2 power 10 is called 1 kilo. ठीक है, 2 power 10 mana 1024. 1024. सही है ना, ताकि खबर होंदी ना यह गल. सर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट छा होना है? Most significant and least significant छा होना है? अच्छा छा होंदा आहिनि. हलो अचूं था वरी ॿुधायां थो. इहो पहिरीं बि ॿुधायो वरी ॿुधायां थो, पर हिकिड़ो मिनट. ओके. सो 2 power 0 छा हूंदो आहे? 1. 2 power 1 छा हूंदो आहे? 2. 2 power 2 छा हूंदो आहे? 4. Then 2 power 3. 8. ये शयूं त वरी तव्हांखे बिल्कुलु याद हुजनि सफ़ा बरज़ुबान क्विकली. ठीक है. 2 power 4 16. Yes, 2 sir. power 5 32. 32. 64. 2 power 6 64. 64. 7 1 to 8. 2 power 8 128. 56. 120. 256. and 2 power 9. 2 power 9 512. 512 and 2 power 10 100. 1024. ठीक है. 1024 equal to 1k. ठीक है. and 2 power 11 2k. 248, sir. ठीक है. and similarly 2 power 12 4k. ठीक है. 2 power 12 छा थींदो? 4k. 4K, sir. Similarly 2 power 20 छा थींदो? 1 mega. छा? 1 mega. and 2 power 30 छा थींदो? 1 giga.
2 पावर 40 छा थींदो? 113. 113 सही है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अच्छा सही है। हाणे पाण अचूं था लीस्ट सिग्निफिकेंट ऐं मोस्ट सिग्निफिकेंट ते। ठीक है, त ही नंबर्स 1 है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन नज़र अचे पियो? Yes, sir. हाणे हिन में हिन जो वेट, हिन जो वेट केतिरो आहे? हिन जो वेट आहे 2 पावर 0। छा आहे? Power 0. 2 पोइ power 0. हिन रेड वारे जो वज़न छा आहे? 2 पावर 0। हिन ब्लू वारे जो वज़न छा आहे? 2 पावर 1. 1। ऐं हिन जो वज़न छा आहे? 2 पावर 2। 2. सॉरी 2 पावर 2। हा, ऐं हिन जो वज़न छा आहे? 2 power 2 3. power 3. 2 पावर 3। हाणे मतिलब छा थियो? हिन ॻाल्हि जो मतिलब इहो थियो त हिन जो वेट आहे 8। Sir. हिन जो वेट आहे 1। हिन जो 1 आहे। पोइ नेक्स्ट जेको आहे उन जो वज़न केतिरो आहे? 2। उन जो वज़न 2 आहे। ऐं इन खां पोइ वारे जो वज़न केतिरो आहे? 4। 1 2 4 है न। ऐं 8 कंहिंजो वज़न आहे? ओ हिन जो। ठीकु आहे न, 8। ऐं 1 कंहिंजो वज़न आहे? 1 रेड वारे जो। सही आहे। ऐं 4 कंहिंजो आहे? ग्रीन वारे जो। ऐं 2 कंहिंजो वज़न आहे? ब्लू वारे जो। त सभिनी खां घटि वज़न कंहिंजो आहे? रेड वारे जो। सही आहे न। ॾिसो, रेड इज 1 हियर एंड इट इज इक्वल टू 1। जॾहिं ही 1 थिए थो, जॾहिं ब्लू वारो 1 थिए थो त माना उन जो वेट केतिरो आहे? 2। जॾहिं ही ग्रीन वारो 1 थिए थो, ग्रीन वारो 1 थिए थो त इन जो वज़न केतिरो आहे? 4। 4. ऐं जॾहिं ही येलो वारो 8. 1 थिए थो त इन 1 जो वैल्यू केतिरी आहे? 8। हिन 1 जी वैल्यू 8 आहे। हिन 1 जी रेड वारे 1 जी वैल्यू 1 आहे। ऐं ब्लू वारे 1 जी वैल्यू 2 आहे। ऐं ग्रीन वारे 1 जी वैल्यू 4 आहे। त जेको राइट ते आहे, सफ़ा राइट ते आहे, राइट मोस्ट बिट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीकु आहे। ऐं जेको लेफ्ट मोस्ट आहे उहो मोस्ट सिग्निफिकेंट आहे। राइट मोस्ट बिट माना सभिनी खां साॼे पासे वारो, इहो छा आहे? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आहे। ऐं लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लेफ्ट मोस्ट जेको हूंदो आहे माना जेको खाॿे हथ ते हूंदो आहे उहो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आहे। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऐं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। साॼे पासे वारो लीस्ट आहे, खाॿे पासे वारो मोस्ट आहे। सही है। The one on the right side is the least significant bit and one on the left side is the
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट माना हुनजी वैल्यू सभिनी खां वज़न वधीक आहे, वेट वधीक आहे लेफ्ट वारे जो, ऐं राइट वारे जो वेट सभिनी खां घटि आहे। ठीकु आहे, त हिन में हुयो हिकिड़ो निबल राइट ते आहे, हिकिड़ो लेफ्ट ते आहे, त राइट वारे जो वज़न सभिनी खां घटि आहे, लेफ्ट वारे जो वज़न सभिनी खां वधीक आहे। ही सभिनी खां राइट ते आहे त ही लीस्ट सिग्निफिकेंट आहे, ही सभिनी खां लेफ्ट ते आहे त ही मोस्ट सिग्निफिकेंट है। सही है, नॉट क्लियर? क्लियर। ओके जी जी सर पाण सिग्निफिकेंट के इहो चई सघूं था लाइक हिनजी पावर जी वैल्यू ज्यादा हुजे हू मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट आहे। हाँ हाँ, जंहिंजो वज़न सभिनी खां वधीक हुजे। ॾिसो हिन में राइट वारे जो वज़न 1 आहे, लेफ्ट वारे जो वज़न 8 आहे। त पावर ज़ार हिन जो 3 आहे तॾहिं त ही 8 आहे न, हू पावर 0 आहे, ही पावर 3 आहे, पावर 3 वॾो आहे। जी ठीकु आहे। जी Okay, so you will begin from right खां शुरू थींदो आहे। अच्छा, डेसिमल नंबर्स में भी ईअं हूंदो आहे, राइट ते स्मॉलेस्ट वेट हूंदो आहे, राइट ते एका हूंदा आहिनि यूनिट्स, पोइ टेंस, पोइ हंड्रेड्स, पोइ थाउजेंड्स। डेसिमल में भी त ईअं ई हूंदो आहे न। अच्छा, मेमोरी जो टाइप्स कहिड़ियूं आहिनि? रीड ओनली मेमोरी which is permanent memory। ठीक है, and in digital world you will hear the word non volatile। non volatile mana permanent actually, and other word that you will hear is volatile। volatile volatile means temporary। so actually there are two types of memories। ठीक है, please switch off your mic, switch off your mic। अच्छा, there are two types of memory। हिकिड़ी memory असां ROM आहे, read only memory, ऐं हिकिड़ी RAM आहे न, random access memory। now both we use both because we put program, we store our program के में विझंदा आहियूं परमानेंट मेमोरी में, ऐं डेटा के में विझंदा आहियूं टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी में। ठीक है, because there are few things we want to be stored permanently and there are few things which we don't want to save permanently। the computer के जने on कबो न, the computer should know, computer asks you what to do, what should I do। the computer के केर ॿुधाईंदो त तोखे छा करणो आहे? the program। who will tell the computer what to do? it is the program which will tell the computer what to do। see, whenever you open your computer, switch on, what happens? it loads operating system। computer छा कंदो आहे? ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड कंदो आहे। तव्हांजे कंप्यूटर ते कहिड़ो ऑपरेटिंग सिस्टम आहे? विंडोज। सर वीए फोन। वीए फोन। सर आई एम यूजिंग फोन राइट नाउ। अच्छा, सही है, तो एंड्रॉइड है ना? यस सर। इट मे बी एंड्रॉइड, इट मे बी iOS। ठीक है, there are different operating systems। so whenever you switch your phone, it is also a computer। ठीक है, small computer। so whenever you switch on your phone,
it loads the operating system first. Now, there is a permanent memory in your computer which tells the computer that go and load the operating system, open the operating system. So it starts, running a permanent program which is written in ROM. Whenever you open the computer, it starts executing the program stored in ROM. ठीक है? अच्छा, उन प्रोग्राम के पाण चवंदा आहियूं BIOS. छा? BIOS. BIOS. Basic Input Output System. ठीक है? It tells, हिकिड़ी रूटीन जी ॻाल्हि हूंदी आहे त भई उथण शर्त तोखे छा करणो आहे. ठीकु आहे? जीअं पाण छा कंदा आहियूं उथण शर्त, पाण अखियूं खोलींदा आहियूं, है न? निंड मां उथंदा आहियूं, अखियूं खोलींदा आहियूं, अखियूं मटींदा आहियूं, पोइ वॉशरूम ईंदा आहियूं, फ्रेश थींदा आहियूं. इट इज़ BIOS प्रोग्राम. ठीकु आहे? सभिनी खां पहिरीं छा कंदा आहियूं? मुंहुं धोईंदा आहियूं या मोबाइल ॾिसंदा आहियूं? मोबाइल ॾिसंदा आहियूं. ठीकु आहे, सही आहे. त हर कंहिंजो थोरो BIOS मुख़्तलिफ़ हूंदो. सही आहे. टाइम ॾिसण लाइ ॾिसंदा आहियूं त केतिरो टाइम थियो आहे. सही आहे. अच्छा, पोइ तव्हांजा जेके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हूंदा आहिनि, they are stored in RAM. Application programs are stored in disk. Actually, disk में store थियल हूंदा आहिनि. But the data which is to be processed is sent to RAM, random access memory. RAM processes the data. So, processor processes the data which is in the RAM. सही है? So, for example, if you are doing 2 plus 2, for example, for example, you are doing A plus B. Your program is executing this instruction. C is equal to A plus B. The program छा कंदो? Program will, this A, actually, A is fetched. A is fetched from RAM. ठीक है? Program छा कंदो? Program छा कंदो? Fetches A from RAM. Then fetches B from RAM. छा? Fetches B from RAM. Then पोइ छा कंदो? Program adds A and B. Stores the result in RAM. ॾिसो प्रोग्राम छा कंदो आहे? Your application programs are stored in RAM, माना are placed in RAM for execution. ठीक है? त पोइ A RAM मां खणबी आहे, value of A, माना it goes from RAM to the processor. B is also stored in RAM. It goes from RAM to the processor, and result C is, sent and stored in the RAM. ठीक है? A किथे हूंदी आहे? RAM में हूंदी आहे. B किथे हूंदो आहे? उहो बि RAM में स्टोर थियल हूंदो आहे.
पहिरीं A जी वैल्यू रैम मां वेंदी आहे इनसाइड प्रोसेसर, पोइ B जी वैल्यू वेंदी आहे फ्रॉम रैम टू द प्रोसेसर, पोइ प्रोसेसर छा कंदो आहे A ऐं B खे ऐड कंदो आहे ऐं पोइ रिज़ल्ट किथे मोकिलींदो आहे रैम में। त रैम में छा हूंदो आहे डेटा टू बी प्रोसेस्ड एंड ऑफ कोर्स द प्रोग्राम्स जेके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हूंदा आहिनि उहे रैम में हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, इज़ इट क्लियर? Yes, sir. त इहा हाणे कहिड़ियूं कहिड़ियूं एप्लीकेशन्स आहिनि? फॉर एग्जाम्पल ब्राउज़र is your application. To run the browser will be loaded in RAM. Browser किथे ईंदो पहिरीं RAM में ईंदो। Browser is a program, computer program, application program. उहो पहिरीं किथे वेंदो RAM में वेंदो, पोइ प्रोसेसर उनखे एग्जीक्यूट कंदो प्रोग्राम खे। ठीकु आहे, स्टोरेज ओके, ही पंहिंजो जेको सॼो ऑपरेटिंग सिस्टम पहिरीं स्टोर थींदो आहे। हा, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन्स जेके बि आहिनि उहे डिस्क में इंस्टॉल थींदा आहिनि। कहिड़ी डिस्क हूंदी आहे? हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क, compact disk, digital video disk. These are storages. ये disks हैं। ठीक है, floppy disk is obsolete. It is large storage in which you want to keep your data safe and your programs safe, application programs, even system software. You want to place in the large storage, and you need large storage. It can be provided by magnetic disks. They are called hard disks. Floppy disk was small magnetic disk, and it is no more, it is obsolete. We don't use it today. अच्छा, अगे CDs use थींदियूं हुयूं, DVDs use थींदियूं हुयूं. These are also obsolete now. Nobody uses them. Because actually electronic memory, solid state memory like USB became more common. USB and SIM card hunda hai na, memory card hunda hai nandla, theek hai, they are electronic memories. They have become more common nowadays. So you can buy USB drives very, they are quite economically. You can buy them and use them, and they are more reliable. ठीक है, for example floppy disk जेका हुंदी हुई, that was very very unreliable. Whenever we used to store our programs, असां छा कंदा हुआसीं, साॻियो प्रोग्राम ॿिनि टिनि डिस्क्स में रखंदा हुआसीं, छाकाणि त डिस्क वॉज अनरिलायबल। माना असां खणी हितां प्रोग्राम्स खणी वञूं ॿिए शहर में, उते वरी ओपन न थियनि त प्रॉब्लम थी वेंदो। इन करे असीं छा कंदा हुआसीं, साॻियो प्रोग्राम ॿिनि टिनि डिस्क्स में सेव करे वेंदा हुआसीं। दे वर नॉट रिलायबल। ठीकु आहे, CD drives बि ईअं ई हुयूं। they used to run a few times, but then उन्हनि जी क्वालिटी ख़राब थी वेंदी हुई, डेटा ख़राब थी वेंदी हुई। And then came the USB. USB सां लाइफ सिंपल थी वई। It was USB memory stick जेका आहे उन सां लाइफ ईज़ी थी वई आहे। We can store gigabytes, and they don't take lots of
They don't cost us lots of money and they are quite reliable. Acha, you should be knowing what is random access and what is sequential access. Actually, on the left hand side, you see the floppy drive, the optical disk, and the USB. They all are random access devices. They all are random access media. Cha? Random access media means you can open any location you like. You can open any file, any location, any data. ही जेको साम्हूं शेल्फ नज़र अचे पियो, इहो शेल्फ छाजे लाइ यूज़ थींदो आहे? बुक्स जे लाइ। बुक्स खे स्टोर करण लाइ, संभालण लाइ। ठीकु आहे, ऐं पाण खे को किताब खपे थो न, को बि किताब, you can take any book you like, any book randomly, any book you like, you can take it directly. It is called random access. It is called random access. Mana, without disturbing any other book, you can take any book. You can take any book without displacing other books. अच्छा, ही बॉक्स जेका आहे राइट ते, या छाजे लाइ यूज़ थियल आहे? ही बॉक्स छाजे लाइ यूज़ थियल आहे? Sir, books. Sir, he like Sir, store the books. To store books. But see, Yes, sir. you cannot take any book you like. Yes, sir. हिकिड़ो कढणा से सभिनि खे कढणो पवंदो। हा, जेको सफ़ा हेठि आहे न, मूंखे उहो किताब खपे थो, जेको सभिनी खां हेठि पियो आहे। हाणे पाण तव्हां मूंखे कीअं कढी ॾींदा? सब बुक्स डिस्टर्ब थी वेंदा उन्हनि खे साइड ते रखी करे। पहिरीं सभिनी खां मथे वारो हटाईंदा, पोइ नेक्स्ट खे हटाईंदा, पोइ थर्ड खे हटाईंदा, पोइ फोर्थ खे हटाईंदा। ईअं सभु किताब हटाए Yes, पोइ sir. आख़िरी किताब तव्हां कढंदा। Yes, sir. That is called sequential access memory. That is called Sequential access memory. हाणे इन में छा आहे न, त ही जेका तव्हांजे साम्हूं कैसेट आहे न, कैसेट Yes, इज sir. sequential access memory. We used to store computer programs in this cassette. इन कैसेट में कंप्यूटर प्रोग्राम्स खे सेव कंदा हुआसीं असां। पर हिन में स्पूल आहे, माना बिट बाय बिट सीक्वेंस में सेव थियल हूंदो हो हिकिड़ी। त जेको प्रोग्राम, इलाही सारा प्रोग्राम्स आहिनि, प्रोग्राम 1 2 3, त 4, 5, 6. प्रोग्राम 3 एक्सेस करणो आहे त you should first go through program 1 and then program 2, only then you can reach to program 3. 4. ठीक है, प्रोग्राम 3 के एक्सेस करण लाइ you need to access program 1 and program 2, ताकि उन मां पास थियणो पवंदो। हाणे ही ॾिसो न, जेकॾहिं तव्हां गाना कोन ॿुधंदा हुआ न, तव्हां इन कैसेट में गाना ॿुधंदा हुआ कोन ॿुधंदा हुआ? I No, used to sir. listen to songs using cassettes. अच्छा, कैसेट में जेको पसंदि जो गानो हूंदो हो न, उहो आख़िरी हूंदो हो। त सभिनी खां जेको सुठो गानो हूंदो हो, उहो किथे हूंदो हो? सॉन्ग नंबर 6।
and you need to listen all the songs, song number 1, 2, 3, 4, 5, before you can listen song 6. सही है? Yes, sir. So it is sequential memory. The electronic memories, you can call them ROM or RAM, but both are random access memories. जबकि electronic memories and random access memories and ठीक. Now this is new memory, DNA based memory. DNA ॿुधो आहे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, प्री मेडिकल वारनि खे त ख़बर ई हूंदी न. Yes, sir. DNA deoxyribonuse. ठीक आहे. इहो किथे हूंदो आहे? इहो क्रोमोसोम में हूंदो आहे. ठीक आहे. ऐं क्रोमोसोम किथे हूंदो आहे? लिविंग सेल जे न्यूक्लियस में. लिविंग सेल जे Nucleus. अच्छा, इन में हिकिड़ा बेसिस हूंदा आहिनि, नाइट्रोजन बेसिस हूंदा आहिनि. Yes, sir. अच्छा, हाणे now these bases can be used to store data. These can be used to store digital data. ठीक है? For example, For example, 0, 0. This can be used to store 0, 0. सही है? Yes, sir. This can be used to store 0, 1. This can be used to store 1, 0. 0, 2 na baba. Digital data, binary data. सही है? And 1, 1. ठीक है? The cytosine, for example, it can store 1, 1. And for example, and adenine can use store 0, 0, for example. ठीक है? ऐं ॿियो छा आहे? Guanine can store 0, 1. ठीक है? And thymine can store 1, 0, for example. So they can be used to store data. So you can make synthetic DNAs in the lab to store data. So yeah, and DNA ja capacity, 1 gram of DNA can theoretically store hundreds of terabytes or petabytes of data in a space smaller than a sugar cube. Sugar cube ॾिठो आहे न? हिकिड़ो sugar cube, हिकिड़ो sugar जो हिकिड़ो दाणो. Yes, sir. Sugar cube न? Sugar cube मूंखे ख़बर न आहे. मूंखे लॻे थो sugar cube मिलंदो आहे. Sugar cube मिलंदा आहिनि. तव्हां मार्केट मां वरिता आहिनि कॾहिं? हा, sugar cube पाण sugar cube पाण वटि एतिरा कॉमन कोन आहिनि, पर यूरोप में माण्हू इलाही यूज़ कंदा आहिनि sugar cube. और ही sugar cube कॉफी में मिलाइण लाइ पिया हूंदा आहिनि क्यूब्स. पाण छा कंदा आहियूं? पाण स्पून यूज़ कंदा आहियूं न? Yes, sir. पाण चिमचो खणंदा आहियूं ऐं पोइ उन मां हू शुगर थोरी खणंदा आहियूं, है न? Yes, sir. पर हू छा कंदा आहिनि? पैकेट्स वठी ईंदा आहिनि. उन्हनि पैकेट्स में इलाही सारा क्यूब पिया हूंदा आहिनि.
ठीक है त जंहिंखे थोरी शुगर खपंदी आहे उहो हिकिड़ो क्यूब विझंदो आहे जंहिंखे इलाही शुगर वणंदी आहे उहो 2 क्यूब विझंदो आहे त ही समझो त 1 स्पून ऑफ शुगर है ना ठीक है इन्हें में you can store petabytes you can store petabytes of data in this cube ठीक है and longevity DNA lasts for centuries or millennia माना हजारें साल ठीक है vastly outliving standard magnetic tapes और hard drives हाणे ही जेका लाइफ है ना हार्ड ड्राइव्स जी हार्ड डिस्क ड्राइव जेके हूंदियूं आहिनि मैग्नेटिक डिस्क्स हूंदियूं आहिनि उन्हनि जे मुक़ाबले में ही इलाही वधीक स्टेबल आहे इट कैन स्टोर डेटा फॉर मिलेनिया हज़ारनि सालनि लाइ सेंचुरीज़ लाइ डेटा हिन में पई हूंदी ख़राब कान थींदी डीएनए में इहो फ़ाइदो आहे न DNA can store data reliably for thousands of years, hundreds of years. And उनकी capacity is very high. They can store hundreds of terabytes in small area. And drawback है it cannot be very it cannot be accessed very fast, very quickly. Like USB इलाही फास्ट है उन मां डेटा उन में विझण ऐं उन मां कढण इलाही तकड़ो थी वेंदो आहे डीएनए में डेटा विझण ऐं उन मां कढण स्लो आहे सही है क्लियर Yes, sir. अच्छा next now she is Anaga Rajesh Anaga Rajesh she is the founder of deep tech startup biocompute हुन कहिड़ी कंपनी ठाही biocompute जे नाले सां she was student हाँ ही सिर्फ स्टूडेंट हुई किथे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पीलानी इंडिया ही छोकिरी जेका आहे इंडिया जे हिकिड़े इंस्टीट्यूट में सिर्फ़ हिकिड़ी स्टूडेंट हुई ऐं हुन पंहिंजी कंपनी ठाही 2024 में बायोकम्प्यूट एंड शी सक्सेसफुली बिल्ट India's first end prototype to write and retrieve digital data from DNA हुन DNA मां हिकिड़ी स्टोरेज डिवाइस ठाहे ॾेखारी जंहिंमें हुन सक्सेसफुली डेटा स्टोर कई अने मां रिट्रीव करे ॾेखारी हुन छा क्लेम कयो her data can store all internet data internet te ketri data pai hai you can imagine see ketri sari data hai hede sare internet te hui chave thi moji device jeka hai sade internet ji sari data store kare sage thi theek hai she recently moved to United States of America and she found lots of investors she found lots of investors इलाही सारनि इन्वेस्टर्स तमामु वॾी वॾी इन्वेस्टमेंट कई आहे हुनजी बायो कंप्यूट कंपनी में अच्छा she was actually science student in chemistry हाँ केमिस्ट्री जी स्टूडेंट हुई इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड तव्हां यूज़ कंदा आहियो इहो इनपुट डिवाइस आहे it can you know it can pass text input to the computer to the processor खे तव्हां टेक्स्ट डेटा ॾियण था चाहियो you will use keyboard and टच पैड हूंदी आहे लैपटॉप में माउस एंड टच स्क्रीन हूंदी आहे
they are used to use the GUI, graphic user interface, ठीक है, for effective human machine interaction का शे select करनी है, का को option click करनो है, तो उन्हें जिला ये शे use थियन युन, ठीक है, to give command to the computer, huh? Just with a click you use these devices. Microphone is another example of input device. It passes sound data, ठीक है, camera passes live pictures, videos to the processor, and joystick, you know, it passes commands to the processor, huh? Like very much like a mouse, ठीक है, to play video games. Microphone कीअं कम कंदो है? Microphone converts sound waves to electrical signal, and that electrical signal is converted from analog to digital, means numerical data, binary data, ठीक है, and that goes to the computer processor. Input devices में ॿियो छा आहे? कैमरा कीअं कम कंदी है? Light is reflected from object, it goes to the lens. कहिड़ो लेंस हूंदो आहे? Convex हूंदो आहे न? Convex lens है, छा आहे? Convex lens. It is used to focus light, ठीक है, लाइट खे फोकस कंदो आहे हिकिड़ी पॉइंट ते, उन पॉइंट ते छा पियो आहे? प्राइमरी कलर फिल्टर, छा पियो आहे? प्राइमरी कलर फिल्टर. प्राइमरी कलर्स कहिड़ा हूंदा आहिनि? What are primary colors? Sir, red, green, blue. Okay, red, green, and blue are called primary colors. Why? Sir, सर ये ड्राइव कौन से लेने बैन मार? So because can- their Yeah. combination can produce the other colors. Okay, you can combine them to make other colors. सही है. So this, you know, lens focuses the light on a point, and on that point there is primary color filter. It breaks the light into primary colors. It breaks the light into 3 primary colors: red, green, and blue. सही है. ऐं पोइ प्राइमरी कलर फिल्टर सां गॾु छा लॻल हूंदो आहे? CCD सेंसर, चार्ज कपल्ड डिवाइस, ठीक, CCD device converts the light into electrical signal. It converts light into electrical signal. ऐं उन खां पोइ छा हूंदो आहे? Analog to digital converter. It converts analog signal, electrical signal, to digital, and then it is sent to the processor. सही है? Is it clear? Acha, let me check the. Okay, any questions? You can type on the group. I'm looking at the WhatsApp group. So if you have any questions, you can type, or you can open your microphone to speak. Sir, could you please share the updated version of slides? Of course. Any questions? सर जैसा कॉन्वेक्स है कॉनकेव वही यूज कंदा आहियो नी हींअर जे कैमरास में?
हिन में त यार कॉन्वेक्स लिखियल आहे ॾिसो कॉन्वेक्स आहे कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स इनखे चइबो आहे डबल कॉन्वेक्स माना ॿिन्ही पासनि खां कॉन्वेक्स आहे डबल कॉन्वेक्स सर कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव में डिफरेंस क्या है? Yeah, concave and convex में no problem. See, it is very easy because I will open Google, I will write concave and I will find a good figure to show you the difference. ठीक है हाणे ओयो double concave and double convex. You can see the difference. See. नजर आयो? Yes, sir. Concave is depressed. Huh? Depressed थियल आहे दबियल आहे concave. Convex हीअं मथे उभरियल आहे ठीक है मेरे साथ ग्लासेस में कहिड़ो यूज कंदा आहियो कॉन्वेक्स या कॉनकेव यार ग्लासेस ही मूंखे ख़बर कोन्हे I have सर no कैमरा idea. में कॉन्वेक्स I don't know how do they work, you know. And ही काफी कॉम्प्लिकेटेड हूंदा आहिनि हिन में एक्सिस बि हूंदो आहे तव्हांखे ख़बर आहे न इन जो जेको लेंस आहे हुन में एक्सिस बि हूंदो आहे पंहिंजी जेका नज़र आहे न उन में एक्सिस बि ख़राब थी वेंदो आहे पंहिंजी नज़र जो माना शयूं टेलियूं थी वेंदियूं आहिनि ही उनखे बि करेक्ट कंदो आहे कैमरा में कॉन्वेक्स होती है कॉनकेव होती है यार कैमरा में त कॉन्वेक्स है ना I shown you I already shown you that it is convex. I shown you it is convex double convex. Cha? Convex double convex. See, I show you one more thing. So Yes, sir. He हिकड़े पासे खां आहिनि न see one side of these lenses is one side is plane only one side is concave or convex but see we have used double convex समझ में कौन आयो no समझ में आ गया no he says no okay let me explain again let me explain again okay these two I place here okay this one this is convex okay. and this one is concave so yeah and this one is double convex okay one side is flat see in both cases one side is flat yes, other sir. here this side is concave like a cave it is a cave दबियल है हिन में उभरियल है convex में ठीक है it is raised this is pressed concave में pressed थियल है अंदर convex में उभरियल है ठीक है त ही double convex है because both sides are raised त कैमरा में तो double convex है yes sir ठीक है why it is used to focus light it is used to focus light on one point it is used to focus the light on
one single point. In a single point te छा पियो आहे? Primary color filter. What is the job of primary color filter? It breaks the incoming light into the primary colors. And then behind the primary color filter, there is CCD sensor. CCD sensor ji job cha hai? To convert light into electrical signal. To convert light into electrical signals. Electrical signals में convert थी विंदो त उन्हें का पोछा थींदो है analog to digital conversion. Analog to digital conversion छा कंदो है? Electrical signal के digital signal में convert कंदो है into form of numbers. Yes. And numbers can be processed by the processor. Digital processor. अच्छा output devices में monitors हूंदा आहिनि, printers हूंदा आहिनि, speakers हूंदा आहिनि. Monitor to display you dynamic visual data, visual output, like for example movie, moving pictures. Printer is again visual output, but it is hard copy. It cannot change. It gives you still pictures. And a speaker gives you sound. So when you watch a movie, you use both monitor as well as speakers. Black and white monitors hunda हुआ पेरी पुराने दौर में. सही है? सर एक्सरे मशीन में भी है या यूज थी ना? ना एक्सरे मशीन भी गाल है. You will learn X-ray machines and medical imaging. And I think in 6th semester, we will teach you medical imaging. सही है? हाणे ही जेको ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर आहे इहो पाण पोइ वरी नेक्स्ट क्लास में सिखंदासीं. ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर ऐं पोइ कलर मॉनिटर. ठीकु आहे? उन खां पोइ प्रिंटर कीअं कमु कंदा आहिनि. सही आहे? इहे शयूं पाण वरी नेक्स्ट लेक्चर में सिखंदासीं. टाइम हींअर ख़तम थी वियो आहे. यस सर. त ही आउं अपलोड करे छॾींदुसि. आई विल अपलोड दिस वन. ठीकु आहे? So see, this Indian girl can do wonders. You can also do wonders. Inshallah, sir. See, there is a field called computational biology. Computational biology हिकिड़ी field है. उन सां पाण कैंसर जो इलाज कढंदासीं. उन सां पाण ऑटो इम्यून डिजीज़िस जा इलाज कढंदासीं. We will even treat aging. We will, eliminate aging from people using computational biology. We will eliminate all the genetic disorders from human body using computational biology. So see, there is lots of work you can do. You can do wonders. You can contribute to the human health. But for that, you need to learn computers. AI, computers. They it's the area of the time. But AI में जेको वॾे में वॾी जेका हींअर खैर AI जी application is everywhere. Everywhere you apply AI. But see, health has lots of funding. Biomedical engineering में तमाम घणी फंडिंग आहे. सॼी दुनिया फंड करे थी biomedical में. The biomedical engineering uses AI. Nowadays, every field uses AI. So you need to learn computers. ऐं जेके computers जा concepts आउं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि computing जा. They are very important. So yeah, and you need to learn them. You need to grasp them. You need to understand them, and you need to come up with new ideas yourself. ठीक है ना?
And that's why please do not ask me again this bad question. I don't like it. तब असांखे याद करणो आहे छा? Please do not try to memorize things. It is impossible to memorize everything, but you can understand everything. Memorize, I don't know. How will you memorize words and letters written in book? Nah, you can memorize concepts, you can understand concepts, but don't try to, memorize it, use rote memory. ठीक है? Is it clear? Yes, sir. Okay, sir. Okay, Yes, sir. please write your roll numbers and write present in the WhatsApp group. Okay, sir. Roll number and present.